Assalamu alaikum and very good afternoon to all the respected students, my dear students. Last time in accountancy, we saw the journal entries, normal journal entries in share capital. Now, journal entries will remain the same in all the sums. Only few things will be added in that. So from today we are going to see the sums related to share capital. So first we are going to take the normal sum, simple sum by which we can start the chapter, I mean to say the sums. Now you can see here the question given in front of you. Anish Limited issued 30,000 equity shares. 30,000 equity shares issued by Anish Limited of 100 rupees each. Here means that one share equal to 100 rupees and total 30,000 shares are issued. I'm writing here 30,000 shares and one share equal to 100 rupees each. This is what I mean to say. Payable 30 rupees on application. So on application, how many rupees are there? 30 rupees are there. On allotment, 20 rupees are there. So I will write down here on allotment, 20 rupees are there. On first and final call, remaining amount, 20 rupees I mean to say, sorry. Payable 30 rupees on application, 50 rupees on allotment, sorry. And first and final call, 20 rupees. So if you go for the total 50, 30 and 20, 100 rupees total will be there. यहाँ पे कंपनी ने 30,000 शेयर इश्यू किए हैं. One share value 100 rupees is there, and company asked the money or raised the money from people on different stages. On application, company asked for 30 rupees, on allotment 50 rupees, and on first and final call 20 rupees. Now see further, all the money was duly received. Record these transaction in the journal book of the company. So we have to write the journal entries now. Now students, you can see here, if I write the first journal entry here, journal entries. First, we are going to write the journal entries for allotment, application, sorry. Application, we will write two journal entries. First entry of the application is bank account debit to share application account. Bank account debit to share application account. Now, application total 30 rupees are there and total 30,000 shares are there. So 30,000 shares and 30 rupees if we multiply, it will be 9 lakh rupees. Being amount received on application. Being amount received on application. Now for application, second entry will also be there. So second entry will be like this: share application account debit to share capital account. Now whatever amount you have written here, same amount will be here, 9 lakhs. Being amount received on application transferred
to share capital account. सेकेंड एंट्री, ये जो एंट्री मैंने लिखी है वो एप्लीकेशन की एंट्री है. फर्स्ट एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 9 lakh rupees. How 9 lakhs? 30,000 total shares and 30 rupees on application. Second entry share application account debit to share capital account 9 lakh rupees. तो ये दो एंट्री मैंने लिखी है एप्लीकेशन की. ना दूसरी आएगी एंट्री ये आएगी अलॉटमेंट के लिए. अलॉटमेंट एंट्री नंबर 3. जैसे एप्लीकेशन में 2 एंट्री है, अलॉटमेंट में भी 2 ही आती है और कोई फर्क नहीं है. जो एप्लीकेशन में फर्स्ट 2 एंट्रीज है जो लिखी है वही लिखनी है, लेकिन ऑर्डर में रिवर्स हो जाएगा. यानी जो सेकंड एंट्री यहाँ पे है वो यहाँ फर्स्ट होगी और ये जो यहाँ पे जो फर्स्ट है वो सेकंड हो जाएगी. सो हाउ द एंट्री विल बी लाइक दिस. दिस सेम एंट्री विल बी हियर. I have written here share application account debit, so I will write down here share allotment account debit to share capital account. Allotment 50 rupees are there, so 50 rupees into 30,000, 15 lakh rupees will be there. एंट्री नंबर 4, नरेशन तो सेम ही रहेगी, जो यहाँ पे है वो सेम नरेशन, सिर्फ एप्लीकेशन की जगह पे वर्ड आएगा अलॉटमेंट. नाउ एंट्री नंबर 4, यहाँ जो फर्स्ट एंट्री है वो एंट्री नंबर यहाँ पे 4 होगी, यानी सेकंड एंट्री फॉर अलॉटमेंट रिपीट हो जाएगा. तो आई विल राइट डाउन हियर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. सेम अमाउंट जो यहाँ पे 15 lakhs वही कॉपी करनी है. तो पहली 2 एंट्री है एप्लीकेशन की, सेकंड 2 एंट्री है अलॉटमेंट. अब आएगा फर्स्ट कॉल. फर्स्ट कॉल फाइनल एक ही कॉल है, यानी फर्स्ट कॉल बोलिए फाइनल कॉल बोलिए सेम ही है. फर्स्ट कॉल ऑब्लिक फाइनल कॉल. एंट्री नंबर 5, फिफ्थ एंट्री. अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, जो आपने अलॉटमेंट की एंट्री लिखी है वो एंट्री कॉपी करनी है, सिर्फ वर्ड चेंज करना है. व्हाट वर्ड यू हैव टू ऐड? यू हैव टू राइट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इंस्टेड ऑफ अलॉटमेंट. सो सेम एंट्री आई एम गोइंग टू कॉपी हियर, सेम. सो एंट्री नंबर 3 हियर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट. इंस्टेड आई विल राइट डाउन हियर शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. Now, final call 20 rupees are there, first and final call. So 20 rupees into 30,000, 6 lakhs will be there. 6 lakhs will be there. Second entry, first and final call की दूसरी एंट्री आएगी, सेम जो आपने यहाँ पे लिखी है वो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट. 6 lakhs. So these are the entries, journal entries of this question. First 2 entries are of application, then 2 entries are of allotment, and then last 2 entries are of first and final call. First जो एंट्री लिखी है वही यहाँ पे एंट्रीज मैंने पास की है. तो only difference is that order has been changed. Here first entry and second entry, same entries I have written here allotment, but order is changed. And in first call, no need to change order. Whatever that you have written in allotment, you wrote in allotment. Same here, same entries are there. Just the word change. Instead of allotment, I have put the word here final call. Otherwise, entries are same. Even narration will also remain same. Instead of one particular word, you have to add another word. So these are common journal entries of share capital sum. Now we are going to see more difficult sums from next lectures. Thank you very much.